जी मैडम, सादिया मैडम बोले। So this is a spot film taken from the percutaneous transhepatic cholangiogram study, in which I can appreciate there is a dilatation of the left hepatic duct as well as the common hepatic and proximal part of the CBD is appreciated. I can appreciate there is a fling defect is seen at the mid part of the CBD that is causing obstruction and upstream dilatation. However, the contrast is seen going into the second part of the duodenum. Rest of the visualized structures appear unremarkable. So features are consistent with the fling defect due to any obstructing calculi at this location. I would confirm my findings by asking the control film of this patient. Okay, Yes, so ma'am. your findings are conclusive of? Calculus, either a blood clot. So confirm on control film. I asked the control film. Okay, so what led you to thinking that it could be a blood clot in this location and why? Due to previous either surgical intervention like the cholecystectomy, Do as you I see can, do you see any evidence of cholecystectomy on the film? yes, I cannot appreciate gallbladder. You cannot appreciate gallbladder? I am appreciating the gallbladder and cystic duct Would you like to at review your the, film yes, yes, if I yes, insist you so? yes, I Because can. this has changed the whole dynamics of the film if you cannot see the gallbladder. So I would review my findings that the cystic duct as well as the CBD is visualized, which I marked that is full of stones with the proximal cystic duct is also showing the fling defect. So features are consistent with Mirzi syndrome in this patient that is causing dilatation of the left hepatic as well as common hepatic duct. Excellent. So this was if anybody can please remove detonation. Okay. So this was exactly the film, but obviously since it was a real patient, so in my case the GB was absent, but in this case GB is present and it is filled with gallstones, and the stone has also been passed into the cystic duct and is causing upstream obstruction. So what is the stage of disease? This was my next viva question. Because my GI was done by General Atik, so we jumped up 2 questions very quickly. स्टेज इसमें 2 ही रखेंगे क्योंकि लेफ्ट हेपेटिक डक्ट भी डायलेटेड है, कॉमन हेपेटिक भी डायलेटेड है. ठीक है, ग्रेट. इसमें Genlatik did discussion with me upon what Mirizi syndrome is. उसके लिए मैंने एक पिक्चर लगा दिया for every resident to go through it once. और Mirizi syndrome की classification आपने यहाँ पे कर लेनी, and you have to give your classification just when you give a diagnosis, because they expect you to say the classification of the things that we have already. और वो हम end के ऊपर we will once revise. ठीक है, next. नेक्स्ट जो है डॉक्टर जमीना मैडम, आपके 2 केसेस हैं. Yes, sir. This is CT scan abdomen, axial images, post contrast. In this image, I can appreciate there is non-enhancing lesion is noted in the right lobe of the liver with subhepatic collection, as well as the laceration is also appreciated in the right lobe of the liver, and the intrahepatic hematoma is also appreciated. ये जो इंट्राहेपेटिक हीमाटोमा है वो मैं इसका साइज मेजर करूंगी. ये ऑलमोस्ट मुझे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लग रहा है, और जो लेसरेशन है वो भी मुझे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लग रही है. तो मैं इसको मेजर करूंगी, और साथ में मुझे आई कैन ऑल्सो अप्रिशिएट देयर इज कंट्रास्ट एक्स्ट्राविजेशन इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड, एक्टिव कंट्रास्ट एक्स्ट्राविजेशन इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड. बल्कि एक्टिव, हाँ बिल्कुल, Excellent. एक्टिव कंट्रास्ट एक्स्ट्राविजेशन इज ऑल्सो अब अप्रिशिएटेड. when I went till this point, जहां तक आप चली गई हैं फिल्म में, कि you picked up तो the first mistake that you did was lesion eyes को कॉल करें. What happens is जब आप you do your first review, you do your first eye movement of the film, and you pick out that it's a trauma film. Avoid the words like lesion, use the word of area.
that Okay. makes you safe. Okay, so hypodense area, ठीक है, one thing. दूसरी चीज, as soon as you have jumped on to an active arterial extravasation, your film is passed, ठीक है, because that he put up as a brownie point. Because we got time to discuss every film at the end, so I kind of knew के end के ऊपर वो मुझे बता रहे थे कि अच्छा ये मैंने इसलिए लगाया, ये मैंने इसलिए लगाया. सेशन पे टाइम बहुत बच जाता है when you pick up diagnosis. Now the thing is, when you've picked up active arterial extravasation, don't waste time there, jump to the next film. What do you see in the third film? Because for me it was at the end of the film and I had to pick it. In the end of the film, I can see right right atrium ventricle. That the heart is okay. Anything else? Trauma film. Okay. Okay, then there is abnormal hypodense area. Acha, okay, एक minute, ma'am. Just give me a minute. That's okay. Take your time. This is a drill class for you guys because Okay, ma'am. I I can had to pick it. appreciate there is rib fracture is appreciated on the Excellent. left side. So this Or picking up three things on this film will make you get your E. Okay, the lesion, the perihepatic hematoma, the active arterial extravasation, and the rib fracture. So this is exactly what I wanted you guys to be drilled about. When there's a trauma film, complete your brownie points of trauma. okay, ma'am. I I will hope you give the grading of इसकी grade में 4 hepatic, बनाऊंगी. yes, excellent. हाँ, नहीं, Hepatic जब active laceration हो गई, grade 4. yes, active हो गई तो 4 and above. Or they don't want you to go into the nitty gritty details like that. They just check your basic concept. Okay, so your basic concept is excellent. If there's active arterial extravasation, you've picked it up and it's in the arterial phase, तो stage 4 and above हो गया है और साथ में associated osseous injury है, rib fracture. ओके मैम, मुझे इसमें स्प्लीन का भी थोड़ी सी लेसरेशन लग रही थी और इसके नहीं, साथ में साइड पर. वो volume averaging. That's volume averaging. ओके ओके हाँ, spleen is poor. चलें, excellent. Next case, please. ओके. अच्छा, I put up hepatic laceration की grading here, but we will do it later. ठीक है, we will come back to classifications. Wait, एक second, there's some error. Okay. I couldn't find This without arrows, तो फिर इसलिए I put this up. This is CT scan abdomen axial images post contrast in which I can appreciate bilateral pleural effusion is noted along with left lower lung collapse. And yes, there is excellent. pancreas Keep going. is enlarged and swollen with fuzzy margins, and there is surrounding fat stranding is also appreciated, and there is also non-enhancing area is also appreciated within the pancreas, suggesting of necrosis within it. I can also see there is a filling defect in the आई थिंक ये एओर्टा के आगे से गुजर रही है, तो ये आईवीसी से रीनल वेन जा रही है, तो आईवीसी के अंदर मुझे फिलिंग डिफेक्ट लग रहा है. वो नहीं, और that's phase related. वो जो IVC में we Okay. tend to see very often, it's that. अच्छा, the pertinent things that you've seen in your residency, that you kept Okay. seeing in your residency, like phase related artifacts in the IVC, are the commonest thing that we have all seen during our residency. उनको छोड़ दीजिएगा. अगर splenic vein में thrombus नजर आ रहा है, that's important. Okay, portal venous system में with acute pancreatitis, because ठीक है. you know and I know that we are dealing with a film of acute pancreatitis. What is the thing that you want to give next? Close the ओके film. मैम. अच्छा, और मुझे इसमें ये बताना है कि जीरोटास फेशिया की थिकनिंग है और नेक्रोसिस है, और साथ में कोई मुझे सूडोसिस्ट भी है इसके अंदर, तो मैं इसकी स्टेजिंग दूंगी, सीटी सिविरिटी इंडेक्स दूंगी, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट फिल्म पे इफियन फोकस और करके मुझे बताएंगी आप सब. द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू हैव टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज acute interstitial edematous pancreatitis or acute necrotizing pancreatitis. मैम ये acute necrotizing pancreatitis है. Excellent. Now do you remember that table? Acute interstitial Yes. edematous pancreatitis and necrotizing में क्या फर्क है? जो necrotizing pancreatitis की 4 weeks से पहले वाली collections होती हैं, those are abscesses, और उसके बाद फिर ये किसी का माइक ऑन है? मैडम मैं देख रहा हूँ. डॉक्टर हीरा राणा. नहीं ये और है मैडम. ये अच्छा,
अच्छा, कमिंग बैक टू आवर केस। ओके, सो जब नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस है तो जो लेस देन 4 वीक में कलेक्शन बनेगी दैट इज एन एक्यूट निक्रोटिक कलेक्शन, और जो मोर देन Yes. 4 वीक्स में बनेगी वो वॉन्स होती हैं विच आर वॉल्ड ऑफ Pseudocyst. नेक्रोसिस। नो Okay, नो, okay. pseudocyst is ठीक ठीक ठीक. the complication of interstitial edematous pancreatitis. Exactly, this is the thing that I want to inculcate in all of you. जो चीजें क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है ना, रेडियोलॉजिस्ट वो पूछते हैं आपसे। अब आपने इन दो चीजों को फिल्म पे मिक्स नहीं करना। व्हेन यू हैव अक्यूट इंटरस्टिशियल एडिमेटस टाइप ऑफ पैंक्रेटाइटिस, मैं इसका टेबल डाल दूंगी ग्रुप में, तो लेस देन 4 वीक्स में जो कलेक्शंस बनेंगी दोज आर कॉल्ड अक्यूट पेरीपेंक्रियाटिक कलेक्शंस, एपीसीज या अक्यूट पेरीपेंक्रियाटिक कलेक्शंस, और 4 वीक तक वो मेच्योर होकर स्यूडोसिस्ट बन जाती है। ये हम सारा सीक्वेल पढ़ रहे हैं ऑफ अक्यूट इंटरस्टिशियल एडिमेटस पैंक्रेटाइटिस। Necrotizing pancreatitis में less than 4 weeks में the patient has acute necrotic collections, and in more than 4 weeks the same collections become very organized and walled off. So this is a Okay. case of acute necrotizing pancreatitis with acute necrotic collections. Exactly, this was my exam case, and the discussion with Jen Latik was about this: edematous versus necrotizing, less than 4 week में कौन सा क्या बनाते हैं और more than 4 में। Last thing, he wanted me to give a CT severity index. ओके मैम, सीटी सेवेरिटी इंडेक्स में तो 4 नंबर आ गए कि सोलन भी है और पेरीपेंक्रियाटिक कोलेक्शन भी है, और ये मोर देन नहीं, आई थिंक लेस देन 50% को इन्वॉल्व किया हुआ है पेंक्रियाज को नेक्रोसिस के लिए, तो 2 नंबर उसके हो गए, और जो इसने एक्स्ट्रा पेंक्रियाटिक मैनिफेस्टेशंस की हुई हैं 2 नंबर इसके हो गए, तो ये 8 बिल्कुल। नंबर्स हो गए। तो 8 तो हो ही गए। अब देखें, अब मैं आपको यहाँ पे साथ साथ मिस्टेक्स बताती हूँ जो उन्होंने मुझे बताई। दे सेड एनीबडी गिविंग अ 4 और a 6 इज डेंजरस ऑन दिस फिल्म। व्हाई? बिकॉज यू कैन क्लियरली दूर से सी दैट द नॉन इनहैंसिंग एरिया इन्वॉल्विंग द पैनक्रियाज इज नियरली 50% and there's a peripancreatic complication with an effusion. Learn to, पिछली फिल्म में भी मैं आपको यही सिखा रही थी, इस फिल्म में भी यही, लर्न टू पिक अप द एलिफेंट्स इन द फिल्म्स, ठीक है, द बिग थिंग्स। लाइक ट्रॉमा की फिल्म में आखिरी पूरी सीरीज एब्सेंट थी और आखिरी स्लाइस के ऊपर एक रिब फ्रैक्चर थी, ठीक है। सो यू आपने व्हाट यू विल डू इज आफ्टर दिस सेशन इंशाल्लाह इन द लास्ट 2 weeks of your exam, before exam, you will keep revising your checklists, okay? ट्रॉमा की चेकलिस्ट है आपकी कि लिवर में लेसरेशन है तो ओके, मैं पेनक्रियास देखूंगी, मैं स्प्लीन देखूंगी, मैं नीचे पेल्विस में हीमोपेरिटोनियम देखूंगी, मैं सारी बोन्स एक दफा देखूंगी, वर्टिब्रल बॉडी को मिस नहीं करूंगी, रिब के फ्रैक्चर को आई डोंट वांट टू मिस, ठीक है। आई एम नो टीचर फॉर यू गाइज, आई एम वन ऑफ योर कॉलीग्स हु इज ट्राइंग हर बेस्ट टू ट्रांसफर एवरीथिंग दैट आई लर्नड इन माय एग्जाम मोड, वाइवा में जो मैंने सीखा। सो दिस इज नो दिस इज नो लर्निंग सेशन और कॉम्पिटिशन और व्हाटएवर, वी आर को लर्निंग, ओके। So this was my learning in the exam कि यार 3-4 डब्बे खाली होते हैं देन एकदम रिब फ्रैक्चर आ जाती है, ठीक है। तो चेकलिस्ट हेल्प्स, टाइम बच जाता है। सिमिलरली जब अब आपकी पैंक्रेटाइटिस की फिल्म लगेगी, आई एम श्योर लगेगी, किसी एक डे पे तो लगेगी ना, लगी थी फुल एग्जाम में, हमें 2-3 दिन लगती रही है, तो या अक्यूट इंटरस्टिशियल एडिमेटस पैंक्रेटाइटिस होगा या नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस होगा, उसको आप सिस्टमैटिकली लेके चलेंगे। एज सून एज यू पिक्ड अप पैंक्रेटाइटिस, आप अपनी चेकलिस्ट पूरी करेंगे। डू आई सी अ थ्रोम्बस? Do I see collections? Do I see perinephric inflammatory changes? Do I see effusions? Do I see ascites? Okay, done. CTSI is this. ये acute interstitial है, इसमें pseudocyst बनी है, ये necrotizing है, इसमें necrotic collection बनी है। Clear है सबको? Any question? मैम एडिमेटिस पेनक्रेटाइटिस में साथ में एनहेंसमेंट नजर आएगी, उसे ये डिफरेंशिएट नॉन इनहेंसिंग एरिया नहीं होता मैम, नॉन इनहेंसिंग उसका नेक्रोसिस। मैंने पर ऑप भी नेक्रोस पैंक्रियास देखी है, विल यू बिलीव गैंग्रीनस ब्लैक कलर का वो टिश्यू होता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन नेक्रोटाइजिंग एंड इंटरस्टिशियल एडिमेटस। व्हेन वी नो द आउटकम्स ना, तो वी वांट टू लर्न बेटर अबाउट द पेशेंट, ऐसे ही है ना ऑल ऑफ अस एज रेडियोलॉजिस्ट। सो आई एम टेलिंग यू बाय वर्च्यू ऑफ माय एक्सपीरियंस, इनमें इतना फर्क है क्लिनिकली कोर्स में। अक्यूट इंटरस्टिशियल एडिमेटस पैंक्रेटाइटिस कंजर्वेटिवली बहुत अच्छा मैनेज होता है, जबकि अगर कोई भी हाइपो इनहेंसमेंट का एरिया है ना पेनक्रियाज में, उसे अच्छा सा आप विंडो वगैरह करके देखें ध्यान से, और वो गैंग्रीनस हो रहा है, नेक्रोटिक हो रहा है, जो नहीं ले रहा कंट्रास्ट, जो अलाइव टिश्यू नहीं है, यू हैव टू रेज द कंसर्न ऑफ नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस, बिकॉज वो सारा सीक्वेला ही बदल देता है, इट चेंजेस द गेम। लेकिन मैम इसमें भी तो सूडोसिस्ट है सेकंड फिल्म में। उसको आप सूडोसिस्ट कह रही है ना, आप फर्स्ट फिल्म में आपने पिक किया कि ये नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस है, ऐसा ही है।
यानी ये जी तेल उड़ गई है सारी, और ये सब नेक्रोज्ड एक गंदी सी कलेक्शन ऐसे ही है। तो व्हेन यू जी नो कि नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस है, तो नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस अकॉर्डिंग टू द बुक्स जो चीज बनाता है उसको सूडोसिस नहीं कहते हैं। दिस इज टर्मिनोलॉजी डिफरेंस, मैं वो टेबल ग्रुप में डाल दी है। उसको अक्यूट नेक्रोटिक कलेक्शन कहते हैं क्लिनिकल कोर्स में, लेस देन 4 वीक्स में, और मोर देन 4 वीक्स में उसको वॉल्ड ऑफ नेक्रोसिस कहते हैं। हाँ जी मैम कहने लगी थी नेक्रोटिक इसको कलेक्शन वॉल्ड ऑफ मैम उसको वॉल्ड ऑफ पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस वॉपन जो होता था वो कहते हैं ना उसको। वो कहते हैं उसको। दिस इज द वर्ड दैट सर वांटेड मी टू अटर फ्रॉम माय माउथ, कि ये वर्ल्ड ऑफ पेरिपेनक्रियाटिक नेक्रोटिक कलेक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट। मैम इसमें थ्रोम्बस पड़ा हुआ है ना? नहीं, इसमें मेरी फिल्म में भी थ्रोम्बस नहीं था एग्जाम में, और इसमें भी मैंने नहीं। आर्टेरियल कॉन्ट्रास्ट है ना आई थिंक सो, तो आईवीसी का थ्रोम्बस हम आर्टेरियल कॉन्ट्रास्ट में नहीं कहते। नहीं कह सकते। गुड। हाँ। इन ऑल्सो इस जगह के ऊपर कितना कॉमन है फेज रिलेटेड आर्टिफैक्ट जो आता है आईबीसी में, ब्रेथ रिलेटेड। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से जो हो रहा होता है इधर। चले नेक्स्ट कैंडिडेट। Yes, ma'am. ओके, अगेन क्लोजिंग द फिल्म, acute necrotizing pancreatitis। मुझे लगा था एग्जाम में सीटी सेवेरिटी इंडेक्स दे एक्सपेक्टेड मी टू नो, और दे एक्सपेक्टेड मी टू नो कि इनमें क्या फर्क है। ये दो बातों के ऊपर डिस्कशन हो कि मेरा फिल्म उतर गया था। मैडम ये सर्जिकल इमरजेंसी है? सर्जिकल इमरजेंसी नहीं है, बट सर्जिकल हो जाता है पेशेंट वंस इट्स एस्टैब्लिश्ड नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेatitis अबव 6 ऑफ CTSI, दे देन टेक इट आउट। और ये भी मुझे सर ने ही पढ़ाया था वहां पे कि ये इसको हम निकलवा देते हैं, ये गैंग्रेनस टिश्यू सारा। ये कुछ ना, देयर सम ग्लिच, ये या आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है। अच्छा चलें नेक्स्ट। Okay. ये I'm भी मेरे provided with GI के ऊपर लगा था मुझे। I'm provided with the multiple spot view images of the upper GI region study. The contrast is specifying the stomach, proximal small duodenum, and as also the small bowel. I cannot appreciate any filling defect or mucosal irregularity in the stomach, and the duodenum appears as normal to me. I can appreciate filling defect is appreciated within the proximal jejunum in the last image. अच्छा, आप यू विल फोकस ऑन द सेकंड एंड Okay. थर्ड इमेजेस, ठीक है, सेकंड एंड लास्ट, क्योंकि इंटरनेट की रिप्रोड्यूस्ड इमेजेस है, मैंने बहुत ढूंढे थे, तो इसलिए मैंने अपनी ट्राई की है बेस्ट दिखाने की, बट इट माइट नॉट बी दैट गुड। बट मैं आपको बता देती हूँ, सेकंड और थर्ड पे आपने फोकस करना है, और दोबारा एक दफा रिव्यू करें कि ये जेजनम नहीं है। अब आपको आई एम हिंटिंग यू। Okay. सेकंड इमेज पे फोकस करेंगी अगर, तो टेल मी व्हाट यू सी। कंट्रास्ट इज फर्स्ट ऑपेसिफाइंग द Stomach. गुड। उससे पीछे जो लूप आ रहा है ना नजर, लाइट सा फेडेड, Duodenum. यस, वो This is पाइलोरस है, फिर ड्यूडेनम है, और फिर ये आगे आ गई है फ्लेक्स ड्यूडेनम, जैसे पड़ी होती है, ठीक है। अब yes. क्या नजर आ रहा है? अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन बनी है ना एनाटॉमी की। Yes, ma'am. Ma'am, ये narrowing है at the third part of the duodenum. एक्सीलेंट, Of the streak of contrast is passing हाँ, distally. एक्सीलेंट। Into the दिस small वाज द की फाइंडिंग इन माय एग्जाम फिल्म, और फिर डिस्कशन वेंट This ऑन, ठीक है। अब आप मुझे little डीडी blue देंगी। हाँ, Ma'am, this could be smooth obstruction. This can be due to SMA syndrome. And बिल्कुल ऐसे this ही could चलना be है, 8-10 से हाँ, चलेंगी स्पेक्ट्रम लेके, बिल्कुल। this could be due to land bands. This could be due to any adhesion. ठीक है, बोलती And जाए, फिर मैं this आपको could बताऊंगी कि कहाँ पे मेरी फिल्म उतर गई। okay benign causes. This can be due to any abdominal wall hematoma, or this could be any benign etiology. Could be any lipoma, any adenoma, or this could be form चलें, as this is अब both. you're going exactly like I went, and sir gave me a hint. So he said go outside of duodenum. Outside of the duodenum hematoma, or outside एक ही चीज रह गई posterior, है। this could be any retroperitoneal mass, lymphadenopathy, And or CA head of C pancreas. head of तो pancreas बेसिकली वो in CA the head of ankle pancreas sign. लाए थे, Okay. मतलब कहकर, जो कि मैं यूं ही चली थी, लाइक आई डिड नॉट
basically I'm sorry if you guys find me wrong कि मैं I give you a wide differential to start with and then take you to the bottom. That's exactly how I went in the exam and how the examiners kept guiding me and appreciated me through it कि अच्छा हाँ ठीक है, आप जब आप फर्स्ट टाइम एक पेशेंट को देखते हैं तो यू आर थिंकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन यू कीप टेकिंग देम आउट. ऐसा ही करते हैं हम इन रियल लाइफ भी. अगर अल्ट्रासाउंड पे पेरीपेनक्रियाटिक हमें सिस्ट नजर आ जाए तो हम सब कुछ देखते हैं फिर. ओके, इज इट relation में like and everything. So in this case as well, we went on like that. कि smooth narrowing है of the third part of duodenum. अब शुरू करेंगे from areas where there's been an etiology till the end, which is CA head of pancreas. So then he put up a CT of CA head of pancreas and wanted me to stage it. ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है. This is how you will go. So बेरियम मील पे मुझे थर्ड पार्ट ऑफ duodenum की narrowing लगी थी और उसके ऊपर वो मुझे लेके गए थे टिल द लास्ट ईडी विच लाइक मैंने बहुत मुश्किल से मुंह से निकाला था बिकॉज फॉर सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज आई डिड नॉट सी एनी मेस, बहुत स्मूथ सी नारोइंग थी. मैम स्मूथ नर्विंग है, इरेगुलर. बट व्हेन ही सेड के बाहर चली जाओ ड्यूडेनम से तो वही जगह हालांकि मैडम सी हेड ऑफ पेनक्रियास से वो वाइडनिंग हो जाती है सी लूप की. ऐसे ही वाइडनिंग होती है और ऑब्वियसली हमें ये हमने पढ़ा भी है और हमें मॉक्स में भी बताते हैं कि फॉर यू टू से सीए हेड ऑफ पेनक्रियाज लाइक आप एकदम से बस मैलिग्नेंट पे यू हैव एंडेड ना द फिल्म. Like आप सिर्फ narrowing देख के you can't jump, but he wanted me to say it and then I said कि okay, outside duodenum there's only one cause which is CA head of pancreas and then he had the CT scan of it which he asked me to stage. So यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि CA head of pancreas की आप staging देख लीजिएगा. Next. Okay, now the next film ना is that film of mine exam जिसमें we did not reach a conclusion but I again want to show you because मैम एक बात पूछनी थी आपसे. जी 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 मैम ये सीए हेड ऑफ पेंक्रियाज सेकंड पार्ट या में भी वो जो रिवर्स फ्रॉस्टबर्ग और एंट्रल पैड साइन भी देता है तो ये थर्ड पार्ट को भी नैरो कर सकता है. जब बड़ा मैस होगा तो सेकंड और थर्ड दोनों को भी कर सकता है. मैम अगर अनसिनेट प्रोसेस होगा तो वो लाइकली थर्ड पार्ट को इन्वॉल्व करेगा. सेकंड और थर्ड पार्ट की नैरोइंग में आता है एक्स्ट्रा ड्यूडेनल कॉजेज में. ठीक है मैम, थैंक यू. अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट फिल्म है ना ये एक ये आप लोग पिक करें बट मैं आपको ये दिखा रही हूँ रियल क्योंकि एग्जाम को ये हम डिस्कस कर रहे हैं. सो वी डिड नॉट रीच अ डायग्नोसिस ऑन दिस फिल्म ऑफ माइन बट डिस्कशन हुई थी एंड देन वी मूव्ड ऑन. सो नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज. Okay, this is the axial spot view post contrast imaging at the level of the abdomen liver. I can appreciate that the liver parenchyma appears unremarkable. There is no evidence of any lesion. I can appreciate a focal hypodense lesion is appreciated within the tail of the pancreas. And there is no evidence of any associated calcification, no evidence of any distal pancreatic duct dilatation. The head of the pancreas and the body appears normal. I think this is partial volume और जो दरम्यान में हमें लग रही है लाइन डिसकंटिन्यूटी. आप इसकी बात कर रही हैं वो जो एक हाइपरिक फोकस की बेस हाइपोडेंस लियन. हाँ, you can ignore or you don't, if you don't want to ignore, say it. Just give me findings and give me pertinent differentials. Like this hypodense lion. हाँ ना, that's all that we can see now. That's different in the film. Yes. We're addressing this could be due to cystic lesion. I wouldn't call it hypodense because it's primarily even low than it's nearly the fluid density, right? Okay. This left kidney में cyst पड़ी हुई है cortical based उससे match कर. ठीक है? Yes. Okay, this could this fluid intensity and this could be the pancreatic mucinous adenocarcinomas. However, I cannot appreciate any multi-loculation within this lesion. This is appears to be a single lesion. However, I would like to see the other images. And this other differential for this could be serous mucinous serous cyst adenoma. However, there is no central stellate scar in this lesion. This could be a small pseudocyst associated with the pancreas. However, cannot appreciate any signs of pancreatitis. This is now you're on the right track. So this is what I wanted you all. जो मैं basically कोशिश करी थी first film पे भी बताने की कि I wanted you all to know. Go systematically, approach the film systematically. No need to directly jump. So exactly this was my case. There was a solitary cystic lesion of pancreas. I could not see peripancreatic stranding for it to be called a pseudocyst. And sir denied any history of. I respectfully asked, sir, I would like to inquire for history of repeated pancreatitis episodes. He said no. So आप बिल्कुल excellent गई हैं, ठीक है?
तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम B9, बट आपने थोड़ा सा ऑर्डर को बस अपने बदलना है, आप उल्टा देखें, हाँ, malignancy से नहीं जाना B9 पे। स्टार्ट ऑफ फ्रॉम व्हाट यू थिंक इज बेसिक, लाइक स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि सराउंडिंग में इसके कुछ भी नहीं है, सो ये सूडोसिस्ट नहीं है, ठीक है। और फिर करते 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 जैसे सिस्टिक लीजन्स ऑफ पैनक्रियास का पूरा ग्राफ है उस तरीके से उसे अप्रोच करें। बट इवेंचुअली Janalatik was not satisfied and he said to me कि तुम cystic lesions of pancreas फिर से पढ़ना। So I respectfully said okay and he removed the film, ठीक है। So this is just a hint for you guys to know, even then you don't fail the film. Right, You ma'am. discuss, you discuss with them and you guys reach somewhere, reach a mutual diagnosis and then the film is removed. Okay, excellent. Next film. नेक्स्ट सिस्टर उजाला, आप ले मैडम उजाला। जी सर। जी आप ले नेक्स्ट। This was a schematic description of the discussion that I had with sir. मैंने सर को कहा कि सर solitary pancreatic cyst है, अगर आप history of pancreatitis नहीं दे रहे या trauma या anything तो pseudocyst मतलब rule out हो रही है। Other than that, cystic neoplasm में micro होते हैं, macro होते हैं, scar उसमें नहीं था, calcification भी उसमें नहीं थी। So you will go on with your checklist and keep defining the ones that you think are not pertinent and then keep going on. Now, मैम क्या ये VHL हो सकता है? अच्छा, हम मैंने बाकी VHL देख कहा के ना सर को एंड पर, मैंने कहा सर कहीं VHL तो नहीं था, तो he said मैंने तुम्हें जो नंबर दिए मैं वो भी काटता हूँ। तो अब I don't know why he said that. I think he said that because multiplicity नहीं थी, renal cyst भी नहीं थी multiple, और मतलब मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रही हूँ कि जो मेरा रियल आंसर्स थे सभी। सो व्हेन आई सेड इट एंड के ऊपर मैंने एकदम सोच के कहा, मैं कहा सर हाँ cystic lesions of pancreas VHL तो नहीं है। एंड ही गोज अभी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे नंबर काट लूंगा। बस मैं फिर चुप हो गई। सो आई डोंट नो वो क्या था। नेक्स्ट। Okay, I'm provided with spot film of IVU. In this, I can appreciate. IVU? No, I can't see the renal parenchyma, so it is a cystogram. Good. In which I can appreciate there is a bladder is opacified by the contrast, and both distal ureters are opacified. The bladder mucosa is irregular and shows multiple outpouchings. I can also appreciate the contrast is refluxing into the bilateral ureters. The whole course of the left ureter is visualized with the dilatation of the pelvic ileal system. However, the contrast is reaching up to the mid ureter, but I can't appreciate further passage of contrast into the proximal ureter on the right side. Okay, you close your film. On the basis of these findings, my diagnosis is bilateral renal reflux with ureteric reflux with grade 5 on the grade 4 on the right side, and grade 3 on the grade 4 on the left side and grade 3 on the right side. Excellent. Bilateral VURs with comment on the bladder. With multiple diverticuli in the wall of the urinary bladder. Excellent. There is a filling defect which is noted in the lower part of the urinary bladder. नहीं, don't commit suicide. वो फोली है और फोली बस पड़ा है। मैं बताने वाली कि it could be a Foley's catheter. हाँ, वही cystogram. I can't see any filling defect, or as the child X-ray seems to be an adult age, so I can't say there is a posterior urethral valve which causes this reflux on the both sides. ठीक है, तो अब आपने ना जल्दी से कंक्लूड करना है, ठीक है। वी शुड कंक्लूड। अब आपको पता चल गया है कि दिस इज अ केस ऑफ what is it like? What do you think it is? Vesico-ureteric reflux with irregular trabeculated coned bladder is neurogenic bladder. Neurogenic bladder. अब ये पहली मेरी जो फिल्म थी this ये मेरा वो था, I was cross questioned by the opposite examiner. क्योंकि Javed बैठे हुए थे. So he asked me, give me any causes of neurogenic bladder.
और So ये ना बड़ा next I would कुछ like चीजें ना बड़ी सिस्टमेटिकली सुनते हैं जो हमें इतनी आदत नहीं होती अपनी रेजिडेंसी में ना। तो मैं जी। चाहती हूँ कि आप लोग जो हम सब आपस में बैठे हुए हैं लाइक कीप अ डायरी और वो लिखते जाया करें। जैसे मैं भी बहुत लिखती थी व्हेन आई वुड टेक दिस क्लासेस। मैम नस्मा की, ये सर जीशान की, इन लोगों की, सर नईम की बातें आई वुड राइट देम ना, क्योंकि इट हेल्प्स। तो यहाँ पे आपने आज लिख लेना है कॉजेस ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर आपने पढ़ने हैं, और जब आप बोलेंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी बिकॉज नेक्स्ट फिल्म होती है उनके पास, ठीक है। जी। तो यू गिव मी लाइक कॉजेस दे मुझे पीडियाट्रिक एज में न्यूरोजेनिक ब्लैडर। Could be next I would like to do the MRI of the this patient because it is associated with the dystometromalia. ठीक As है, on ये भी this film, ठीक है। I can't see any vertebral anomalies in this film. It could be due ये to बात, low-lying सो गो cord, फ्रॉम tethered बेसिक cord. टू एमआर, ठीक है। सबसे पहले आप बेसिक पे आ जाएं। बेसिक में क्या आप देखना चाहेंगी, बिकॉज देयर इज कंट्रास्ट in this film which cannot let you see the vertebral bodies well. So what do you want? Do you want the control? Plain Is what control I film. said. Okay. So go from basic to MR, Dystometromalia okay? and low-lying cord, tethered cord is also associated with neurogenic bladder, or it can be associated with trauma, which पे जा रही हैं, बेसिक पे रहें, बेसिक पे रहें। एक्सरे था उनके पास, उन्होंने लगा दिया। Can start from control. Okay, since bladder is opacified and I cannot see the rest of the pelvic, what sacrococcygeal vertebral bodies, so I would like a control film. And what do you see on the control? There is a defect which is noted involving the sacral vertebral bodies, as well as a lumbar vertebral body. Do you see coccyx? No. मैं उसको देख रही हूँ, मुझे coccyx नजर नहीं आ रहा. There is no coccyx bone visualized in this film, so caudal regression syndrome could be. This was, मेरे 2 केसेस इसी तरह के थे, लाइक दिस वन जो ये था, जो कि क्लोज ऑन द अदर फिल्म हो रहा था, लाइक उस पे स्टेजिंग पड़ी हुई थी सीटी पे, और इसमें भी ये यूं क्लोज हुआ था, लाइक यू पिक इट अप हेयर and then he wants you to say it's a case of caudal regression syndrome, and I would like to review the whole babygram for pura associations of caudal regression. Okay, now your film is please. ठीक है जी। So neurogenic bladder with bilateral VURs where you cannot see the spinal elements because the bladder was very heavily opacified. Mera wala bladder to it was very, filled with वो contrast. So I wanted a control. I said MR पे आप बिल्कुल ठीक गई थी, but it will make things complicated for you. Start from basics. So sir मुझे तो vertebral bodies भी इसमें I cannot see them completely. I cannot see the posterior elements. So can I have the control, please? So he will give you, and it was a case of caudal regression syndrome. Okay, small parts. मेरा मैम एक क्वेश्चन है। जी जी मैम, एक्सरे के ऊपर हम इसको सेक्टोरल एजेनेसिस बोलेंगे या फिर कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम बोलेंगे? क्योंकि सिंड्रोम तो हम तब कहेंगे जब हम एमआर की फाइंडिंग्स देखेंगे, जब स्पाइनल कॉर्ड की फाइंडिंग्स देखेंगे। यार मैं आप लोगों की तरह इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैंने कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम ही कहा था, बट सेक्टोरल एजेनेसिस वर्सेस कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम में अगर इतने ह्यूज डिफरेंसेस हैं कि लाइक यू कैन नॉट से, तो ठीक है, गो फॉर सेक्टोरल एजेनेसिस। ओके मैम। बट मैं हम आपको इसको ऐसे ही बोलेंगे कि सैक्रल एजेनेसिस है, बट मैं एमआरआई कराऊंगी टू सी द कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम और उसके साथ की एसोसिएशंस। कॉडल रिग्रेशन सिंड्रोम की टाइप्स हैं फिर सारी, there are 4 types of caudal regression syndrome. So you can go ahead with saying that I can appreciate the evidence of sacral agents of the given film, and I would like to review with MRI to confirm my findings of and the staging of caudal regression syndrome. Yes. अच्छा, in my case small parts and MSK was the worst, ठीक है। So if it becomes complicated to handle or anything, तो वो don't feel burdened, just keep going. Next candidate please. Okay, I'm provided with multiple grayscale ultrasound images of a pregnant lady, in which I can appreciate there is in first image I can see there is a cystic lesion which is noted along the cervical spine location, and the second image I can appreciate there is a pleural effusion, and third image I can see that the effusion is bilaterally,
and the cystic lesion is also seen in this image, and also there is the thickening of the edematous skin changes are also noted. The liquor appears adequate. My findings are suggestive of cystic hygroma with bilateral pleural effusion and skin thickening with hydrops vitalis. Excellent. Hydrops vitalis ke he asked me the types. So give me types. मैम टाइप्स का नहीं पता. यहीं पे मैं फंस गई थी. अच्छा इसकी ना Immune and non-immune. immune mediated or non-immune इम्यून और mediated. नॉन इम्यून टाइप अच्छा. सुनना चाह रहे थे एग्जैक्ट टेबल से, तो वो कर लीजिएगा प्लीज. सही. हाँ, इम्यून एंड नॉन इम्यून, और इम्यून और नॉन इम्यून मैंने बताया तो वो रुके नहीं, वो पूरा डब्बा सुन रहे थे मुझसे, वो मैंने घर आके फिर देखा था. सो वो डू दैट. ठीक है, लिख लें कि हाइड्रोप्स विटालिस की इम्यून एंड नॉन इम्यून टाइप्स हैं, और वो आपने एज इट इज पढ़नी है. ठीक है मैडम, जो इम्यून होता है वो RH इनकम्पैटिबिलिटी से होता है, जो हाँ. नॉन इम्यून होता है वो एसोसिएटेड होता है विद द सिंड्रोम्स लाइक डाउन सिंड्रोम्स या टर्नर के साथ. ठीक है, नेक्स्ट. मैडम फातिमा बहार, मैडम नेक्स्ट आप है. जी सर. जी मैम, अस्सलाम वालेकुम. These are the contrast enhanced CT scan X-ray slices of the abdomen, upper abdomen images and the pelvis, in which I can appreciate there are in the pelvis there are large masses are noted involving the with the internal cystic large masses with within the pelvis, and the patient is female, and I cannot appreciate the uterus separately. In the next images, I can appreciate there is a thickening of the generalized thickening of the wall of the stomach is noted with the which is extending and involving the small bowel as well, proximal small bowel. So based on these imaging finding of thick walled stomach with the these masses in the pelvis are Linitis plastica with the metastasis into the ovaries leading to the Krokenberg tumor. एक्सीलेंट. और एक चीज एक और है इसमें फाइंडिंग. पार्ट 2 में ना रेडी रहना है आपने, आपने प्रिपेयर करना है खुद को. उस दिन एड्रिनलिन रश में भूलना नहीं है कि चेकलिस्ट पूरी करनी है. मैम पेरिटोनियल थिकनिंग मुझे लगा था कि जैसे लास्ट इमेज देखो. चलो अच्छा, ये ना आर सेशंस गो ऑन विद अ लॉट ऑफ हिंट. इससे नहीं घबराना, एग्जाम में दे गिव यू हिंट्स. द एग्जाम इज डिजाइन टू पास यू. ठीक है, तो लास्ट इमेज देखें. लास्ट में कुछ हाइपोटेंस लियंस आ रहे हैं विद इन द लिवर. लिवर में भी मेट्स थे. एग्जैक्ट एग्जाम केस था. कुकनबर्ग ट्यूमर्स थे, स्केरस एडिनो ऑफ स्टमक था, और विद हेपेटिक मेट्स. अच्छा, 2-3 बातें इस केस पे हुई थी जिन्होंने मुझे परेशान किया था. एक, ही गेव मी अ पेन एंड ही सेड अभी सारा कैंसर वाला स्टमक पे पेन फेंको. तो वो आपने ना बड़ा केयरफुली फिर जो थिकन्ड वॉल्स ही है ना जो आपको डर्टी लग रही हैं उन्हीं पे रखना है. वो इस बात पे बड़ा फंसा रहे थे सब कैंडिडेट्स को. ठीक है. और दूसरा, वो डीडी ऑफ कुकनबर्ग ट्यूमर्स, डीडी ऑफ बायलैटरल ओवेरियन मेट्स पूछ रहे थे कि और कौन से, नेम एनी 6, एग्जैक्ट सवाल था उनका, नेम एनी 6 ट्यूमर्स व्हिच मेट इन द ओवरी. तो ये भी आप ऐसे पढ़ लो. ठीक है मैम. एक तो ये पहला तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, इसके अलावा पैंक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा है. हाँ. और ब्रेस्ट के मेटास्टेसिस तो वैसे नहीं जाते इसमें, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं. गॉल ब्लैडर और कोलोन का. हाँ, गॉल ब्लैडर में उस टाइम जो 3 मैंने पढ़े थे, अब तो मुझे भूल रहे हैं. वो गॉल ब्लैडर थे, वो पैंक्रियाटिक एडिनो था, और वो कोलोनिक थे. पर इसकी पूरी लिस्ट भी है, मतलब स्टमक और कोलोरेक्टल के अलावा. ब्रेस्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आई थिंक ब्रेस्ट भी मैच करती है, और पैंक्रियाटिक तो होते ही हैं. और एक लास्ट जो इसमें बचता है वो कॉन्ट्रालेटरल ओवेरियन भी होता है. कॉन्ट्रालेटरल ओवेरियन मैस हो, मगर उसमें फिर स्टमक आपको नहीं इस तरह का होगा ना. तो डीडी ऑफ बायलेटरल ओवेरियन मैथ्स और completing your checklist was the learning point in this. Next candidate.
मैडम नेक्स्ट भी आप है मैडम फातिमा। हेलो मैडम फातिमा वहाब। मैडम अंबर, मैडम आप दो जी केसेस थे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। I am provided with spot grayscale and Doppler images from the ultrasound breast, in which I can appreciate a well-defined hypoechoic lesion with contrast, with the significant enhancement on the significant vascularity is appreciated on the color Doppler images. However, I cannot appreciate the lesion is the lesion is wide and tall. However, margins appear smooth. I can also appreciate posterior caustic shadowing. The visualized rest of the image shows no other lesion. Would like to see the rest of the parenchyma. Based on this, my differential would include say Byrad's lesion 4. Next, it would be proceeded with biopsy. अच्छा, अब आप मुझे रीजनिंग देंगी कि ये बायरेट्स 4 क्यों कहा है और 2 क्यों नहीं कहा? मैडम Byrad's 4 इसलिए कहा कि it is wide than tall. रिव्यू करें अपनी बात को। नहीं, वो Byrad's 2 का फीचर होता है wide than tall. हाँ देखा, ये अब मेरे एग्जाम में बहुत बेसिक चीज लगी थी, मैमो या एमआर, बट वो वर्स्ट स्टेशन बना हुआ था फॉर एवरीवन बिकॉज द एग्जामिनर वाज aggressively going into the definitions of Byrad's 2 versus 4 lesions. अब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी, और अगर कोई if there's a tongue twister or any slip of tongue तो please forgive me, but this is how I described in the exam. मैडम छोड़ दो, उस बात की परेशानी ना लें. I apologize for that. नहीं मैं इसलिए कि I'm trying to not make another error. कोई मसला So नहीं we've मैडम, been प्लीज आप provided we've been provided with grayscale and Doppler images of ultrasound breast, which are showing a well-defined hypoechoic, predominantly homogeneously hypoechoic, macrolobulated, wider than taller. अब आप देख रही हैं आपका when you're talking आपका Byrad's define होता जा रहा है. Wider than taller, Byrad's 2. Homogeneous hypoechoic, Byrad's 2. Macrolobulated are usually fibroadenomas. Microlobulated, Byrad's 4. ठीक है? Wider than taller, homogeneously hypoechoic, macrolobulated lesion epicentered within the breast parenchyma, which is not showing any posterior acoustic shadowing, lateral shadowing दे रहा है. Second image को देखें, lateral shadow दे रहा है. There is no posterior acoustic shadowing, rather there is posterior acoustic enhancement. ये जो सफेद हो रहा है, ठीक है, ये 5-7 लाइक स्पॉटर इमेजेस उसने रखे हुए थे एग्जामिनर ने फाइब्रोनोमास के. वो ही वाज चेंजिंग, अल्ट्रासाउंड के इमेजेस थे सारे, बट सब में एक ही चीज कॉमन थी. ऑल ऑफ द लीजन्स वर वाइडर देन टॉलर. They did not have posterior acoustic enhancement. They had lateral shadowing. They were macrolobulated. They had no architectural distortion within their surrounding. They were non-invasive. They did not have surrounding speculations. और minimal सी vascularity थी, एक आध में थी, एक आध में नहीं थी. Based upon my findings, my diagnosis is of a Byrad's 2 lesion. Would you like to get a biopsy? This was the next viva question. नहीं. ठीक है, इसमें एक आंसर उन्होंने मुझे सिखाया था एग्जाम में कि if the lesion is larger than 2.5 centimeters, then you can recommend considering patient's history. Age भी ज्यादा है. This is only because of the guidelines being revised as the incidence is increasing. Okay, so if there is macrolobulated lesion which is greater than 2.5 centimeter, then we like to biopsy it and confirm that okay, it's a fibroadenoma, we can sit on it. मैडम असल में फ्लो में कंफ्यूज किया है ना इसमें मुझे. हाँ, फ्लो में नहीं होना कंफ्यूज. ये मेरे वाले में भी फ्लो था, और ही सेड टू मी कि जब 6 या 8 बातें बिनाइनिटी की तरफ जा रही हैं या टिपिकल हैं फॉर फाइब्रोएडेनोमा, तो डोंट गेट कंफ्यूज. थोड़े से होते हैं वेस्कुलर फाइब्रोएडेनोमास, रियल लाइफ में भी होते हैं. पेरिफेरी पे नहीं, बिनाइन के जो फ्लो होते हैं पेरिफेरी पे होते हैं. हाँ, और पेरिफेरल ही है इसका. ठीक है, so Byrad's 2
lesion. Acha, now this is the exam tip that I want to give you guys. Either you will be given a BIRADS 5, just Or 2. pura Viva will go ahead with that, or you will be given. They don't test you on the border. They don't, because that film is approved. Okay, so typical BIRADS 2 है, so don't commit a suicide. Do it safe. Now, would you like to describe it once more, ताकि आपके मुंह के ऊपर फाइब्रोइडनोमा अच्छे तरीके से आ जाए? जी madam, I am provided with spot grayscale and Doppler images from the ultrasound breast, in which I can appreciate a well-defined, wider than tall, macrolabulated, predominantly homogeneously hypoechoic lesion with Excellent. mild peripheral vascularity and with lateral shadowing. No posterior caustic shadowing is appreciated. No speculated margins is seen. Findings are consistent with BIRADS 2 lesion. Taking the patient's history and considering if its size is more than 2.5 centimeter, we will proceed with biopsy for definite diagnosis. Excellent. And this is how you will approach this case in real life as well as consultants, inshallah. Chale, next case. Candidate I am provided. Ji madam. I am provided with axial slices and corneal reconstruction of the abdomen and axial slices from the CT head and neck section, in which I can appreciate well-defined peripherally enhancing necrotic lesion centered within the right parapharyngeal space in infratemporal fossa. I can also appreciate similar lesions in the left level 2A and 2B. I can also appreciate multiple enhancing lesions, multiple enhancing lesions centered within both adrenal glands. I can also appreciate multiple lesions within the both kidneys, as well as the lesion is enhancing lesion is extending from the left renal sinus, pelvis extending to the left ureter as well. I'm looking for other lymph nodes within the abdomen. Liver shows no gross lesion on the visualized slice. On the provided slices, my diagnosis would include left renal cell malignant lesion with necrotic lymph nodes and review करें इस अब मैं दो hints. I will give you 2 hints and you can review your film. You are at the small part station and look at the skeleton in the first 2 images. Does it look like an adult or a child to you? Madam, child. Good. ठीक है, और चाइल्ड है और मल्टीपल बायलैटरल सर्वाइकल मैसेज हैं, सुप्रारीनल मैसेज हैं और रीनल मैसेज हैं, मल्टीपल हाइपोडेंस मैसेज. व्हाट डू यू थिंक एवरीथिंग इज? सर्वाइकल रीजन में, एब्डोमेन में, एवरीवेयर. व्हाट आर दीज? what is it that's everywhere? Excellent. So it was a lymphoma. Don't get carried away by at one of the images. ठीक है, you see lymphoid masses proliferating everywhere, right? Now the next question was for me that which is the lymphoma in children? What lymphoma should it be? Hodgkin's. Burkitt's. He wanted to hear Burkitt's because of it being bilateral cervical lymphadenopathy with abdomen. According to him, मगर मैंने उसको हॉजकिन नॉन हॉजकिन में ही बता के कि जो नोडल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सॉलिड ऑर्गन के लिम्फोमास होते हैं वो कौन से होते हैं करके आई क्लोज्ड इट एंड देन ही टोल्ड मी कि बच्चों में पीडियाट्रिक लिम्फोमास आर यूजुअली बर्किट्स. बट अगेन दिस इज आई डोंट नो, प्रॉब्ली मे बी अ गुड और एक्सीलेंट क्वेश्चन. सो लिम्फोमा की फील्ड थी. ठीक है, नेक्स्ट. थैंक यू. MSK आ गया. अच्छा, the MSK cases were very subtle, at least for me. I'm sorry. So if try to pick up the findings. Okay, next candidate. मैडम आवरा, मैडम आप. जी सर, अस्सलाम वालेकुम. ये थोड़ी खराब हो गई है, but if you can pick. बस मैम, ये आवाज आ रही है ना? हाँ, I can hear you. Okay, so I am provided with X-ray of both hands, right and left, of a skeletally mature patient.
Here I can appreciate that there is generalized soft tissue swelling or sickening appreciated in all the phalanges. Then I can also appreciate that the bone density, however, appear to be इस slightly केस को मुझे decreased. लग रहा है कि छोड़ दें, ये आपको मिसलीड करेगी. मैं आपको इसका एक और मैम वैसे केस ये वो दिखा पेंसिल एंड दूंगी. कप टाइप नहीं लग रही थी सोरियाटिक की? लग रही है, चलें गुड. हाँ, पेंसिल इन कप मुझे लगा जी खराब हो रही है. नहीं नहीं, मुझे वही लग रही थी. वो ओके. थी. अच्छा, अब मैं इसमें बताती हूँ कि क्या स्टुपिडिटी लगाई थी और मेरे मैम इसमें ड्राइंग. थोड़ी सी मुझे वो क्लाइनोडिक्ली लग रही थी इन द राइट हैंड ऑल्सो, क्योंकि जो लिटिल फिंगर है दैट इज इनवर्ड कर्लिंग हो सकती है, वो कुड बी. that's okay, you can ignore it, but he showed me pencil in cupping at radiocarpal joint. रेडियो कार्पल जॉइंट. ओके ओके. I had never seen it in my life. So I could pick के पेंसिल बन रहा है एक जगह और दूसरा कपिंग कर रहा है और घुस रहे हैं, but honestly I couldn't diagnose psoriasis. So this is your reminder to pick up the signs. Okay. Okay ma'am. Like ये you are very rightly picking के लेफ्ट हैंड में ना वो दिखा रहे पेंसिल एंड कप. ये 1 2 3 4 ठीक है, सब पे दिखा रहे हैं एक्चुअली. सेकंड टू फोर्थ डिजिट, सेकंड टू फिफ्थ डिजिट सब पे पेंसिल एंड कपिंग हो रही है. एंड ही शोड मी पेंसिल एंड कपिंग एट रेडियो कार्पल जॉइंट. एंड वी प्रोसीडेड ऑन दैट केस विद बिकॉज मुझे नहीं पता कि सोराइसिस रेडियो कार्पल पे भी पेंसिल एंड कपिंग कर देता है. तो एक्सरे की फिल्म थी उनकी, अपने हॉस्पिटल से लाए थे कोयटा से. वो उन्होंने मुझसे डीडी सुने थे पेंसिल एंड कपिंग के, और फिर हम एंड सोराइसिस पे चले. ठीक है, नेक्स्ट. Okay, so I'm provided with X-ray frontal projection of the lower leg involving the ankle joint, and also part of the involving part of the ankle joint and the knee joint. I can appreciate a skeletally mature patient. Here I can appreciate some fluffy radiodense lesions in the distal part of the visualized femur, metadiaphyseal, epiphyseal and metaphyseal region. And in the tibia, I can appreciate that there is some broadening of the bone along with the radiodense lesion, which is involving both the epiphysis, metaphysis, and the diaphysis, sparing the distal part of the diaphysis. Along with I cannot appreciate the corticomedullary differentiation in it in the central part, and there is no periosteal reaction seen, no soft tissue swelling either. But to compare the soft tissue swelling, I need the contralateral X-ray of the leg also. So no definite periosteal reaction. However, the lesion is extending into the soft tissue of the surrounding tibia. So keeping in view and revising my findings, my provisional diagnosis would be related to some sclerotic bone lesions that could be meliostosis in the given patient. Do you see a sign? Candlewax, giving candlewax appearance in it. And, dripping candlewax. Okay, dripping candlewax appearance. Next, I would also like to look for the osteopoikilosis or osteopathia striata, which are associated with this kind of disease. And I would also like to see the contralateral part of the leg also. Okay. So what is the association that you would like to ask for if you have any doubts? If it is Malor, patient को आप कुछ पूछना चाहती हैं? मेलियोसोसिस के मैम वो मैम बता दिया, ऑस्टियोपोकिलोसिस या ऑस्टियोपैथिया स्ट्राइटा के साथ एसोसिएटेड होता है ये, और इसमें डिपिंग कैंडलवैक्स अपीयरेंस होती है. किनके ऊपर कोई चेंजेस होते हैं? जी मैम, किनके ऊपर कोई चेंजेस होते हैं? मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आई सही. Sorry guys. Okay, can you hear me now? Yes ma'am, I can hear. मुझे आपके स्किन में आगे नहीं समझ आई. स्किन के ऊपर जिस जगह के ऊपर मेलोर बोन में होता है उस जगह के ऊपर स्किन के ऊपर कोई चेंजेस होते हैं? मैम स्किन के ऊपर जो है वो इसमें बल्बस प्रोट्रूजन सी होती है एडजेसेंट. This is तो मैम पिगमेंटेशन होती है और थिकनिंग होती है. changes, thickened and fibrosed skin in dermatomal distribution. जी मैम, थिकनेस होती है. So if a patient because what's happening, you have to understand the pathology of the disease. It's a neurogenic disease in dermatomal distribution. Neurons wise ये distribute होती है. So wherever there will be a melory or sclerotic lesion on the bones, there will be sclerodermic changes with thickened and fibrosed overlying skin.
Okay, So, ma'am. like Okay. osteoid osteoma may a typical nighttime pain relieved by aspirin will lead you to the diagnosis if you are dubious that it is osteoid osteoma and nothing else. Milor may overlying skin changes of scleroderma will confirm. You don't need anything else, okay? Dermatomal distribution Okay, means ma'am. sclerodermic changes, fibrosed, thickened, coarse overlying skin, whichever distribution of the milor is. Okay, ma'am. ठीक है? Excellent. Jazakallah, ma'am. अच्छा ये ना he provided me full था. He provided me with a full bilateral lower leg radiograph. Okay, ma'am. और nearly इतना ही subtle abnormality थी, but थी और he wanted to go ahead with it, so let's go, let's see. Okay. ये भी मैम मेरा ही है ना? हाँ जी ले लें. अच्छा. I don't know the distribution. Okay. Okay. अच्छा ठीक है. Ma'am, I'm provided with X-ray frontal projection. Seems to be a skeletally mature patient in this case of the lower leg, ma'am, involving the ankle joint of the left side. Partial, I can visualize it. The right ankle joint is not visualized to me. अब इसमें I can appreciate कि there is, ma'am, bilateral cortical thickening आ रही है symmetrical. इसमें तो मुझे यही नजर आ रहा है. थोड़ी सी asymmetry लगती है. जो cortical thickening है asymmetrical होगी. So there was minimal cortical अच्छा thickening. ठीक है मैम. फिर लेफ्ट साइड पे जो टिबिया का लोअर एंड है. Exactly. हाँ. So what do you DD दे मुझे cortical thickening के isolated cortical thickening on only one of the margins, and what do you want next? Close your film. This is it. This is your film. ठीक है मैम. मुझे एक्चुअली वो थोड़ी सी abnormality पकड़ने में इशू हुआ था, बट यही वाली इसी है तरह लेफ्ट मुझे साइड पे. like सब कुछ ही नेगेटिव लग रहा था, so I picked up कि there's a small area of cortical thickening. Yes. asymmetrical cortical thickening है जो sclerotic है थोड़ी सी. अब इसमें जो है I can move on to the differentials. It could be osteoid osteoma juxtacortical जो होता है, but here I cannot appreciate any nidus here. तो वो वाली चीज जो है that will go. Juxtacortical lesion में there is जो है there can be a non-ossifying fibroma or fibrocortical defect, लेकिन again it's through and through. There is no defect उनको ना here. देख क्योंकि वो नहीं आते solitary, सिर्फ isolated cortical thickening में तो वो नहीं आते ना, they're lesions. NOF is a lesion, right? Osteosteoma you can still say कि okay lucent उसका वो नहीं है center, but जी सेंटर नजर नहीं आ रहा नाइटस मुझे ना. Next. तो और इसमें asymmetrical. Okay, so that is exactly how I was guided by my examiner. He said, think of any pathology outside the bone, and what would you like to have next? Outside the bone. मैम कोई lateral view अगर होगा या कोई soft tissue, कोई opacity Soft tissue को देखने के लिए क्या कराती है next आप? मैम lateral view करवा सकते हैं या MRI. I will go for the MRI of the patient. जी. Okay, so in the given MRI नहीं थी ये क्योंकि इंटरनेट का इमेज है, उसके MR में वो कंफर्म हो रही थी, माइल्ड सी थिकन्ड कोर्टेक्स थी अंडरलाइंग और ऊपर ये पड़ा हुआ था. जी. Ma'am, in this image, given image, I can appreciate कि contrast enhanced MR है T1 weighted. इसमें जो है ना, I can appreciate कि जो surrounding muscle है ना, soft tissue है, I can appreciate their enhancing microlobulated lesion है. और ये ना cortex को breach नहीं कर रहा, it is not entering the bone and it is not even breaching the cortex. Cortical जो है ना, वो पूरी इसकी demarcated है, मतलब पूरी इसको I can appreciate it. तो could it be a soft tissue enhancing है और ये fat side image है, post contrast है. Ma'am, is there any history of you're going very well. So there's a homogeneously enhancing. There's a buzzword that I will say here, and you will pick up the diagnosis. Serpiginous lesion with irregularities around its margins, which is centered within the soft tissues along the anterior aspect of the thigh, and it was resulting in minimal cortical thickening of the underlying bone. So what is it? Soft tissue? Soft tissue AVM, arteriovenous. No, we don't see feeding arteries. We don't see veins. Don't complicate your case. Okay, it's a very benign etiology. There's no feature of a high flow vascular malformation. What is the difference between low flow versus high flow? Low flow. Ma'am, जो high flow होता है, that is going to take the contrast very well. ना low flow में जो stagnant flow. There will be shunting. There will be large collators. You will see a lot of vascularity within the surrounding. You will see a lot of shunting veins.
So this is a very something very benign is sitting up there, only resulting in minimal cortical thickening. Okay. Okay. Or a bare soft tissue swelling, which honestly I could not see in my case. But this is a heads up for all of you to know how to approach the film systematically. So you to go till the MRI. And when he put up the MRI for me, he said, now you are left with no clues. So give me the diagnosis and I will, otherwise you are failed. Because वो मुझे इसी पे इतनी help कर चुके थे examiner X-ray पर. जी मैम. He said MR के ऊपर मैं आपको I will not provide you any clue. Okay. Next case, next candidate please. Thank you मैम. Thank you. मैडम hemangioma है ये hemangioma था. Hemangioma था, but what I like examiner की जो trick थी उसने मुझे cortical thickening से लेके गया था वो MR के मैडम इस ऊपर पे hemagioma. मार्क कर दें प्लीज कॉर्टिकल थिकनिंग कौन सी ये है ठहरे मैं annotations करनी है ये. अच्छा ये I got it. ये ना ये प्लेन थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट टिश्यू था. ये इंटरनेट इमेजेस है ना, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू में और यहाँ पे ये बस ये था गड़बड़. इसकी ये गड़बड़ थी बस सारी मेरे केस में. सो मैं तो ना मैम कोई फ्लैबोलिथ भी होता ना तब भी आइडिया हो जाता है एक्सरे पे नहीं ना. था उसमें. हाँ मैंने कहा था तो ही सेड, मैंने कहा सर एक्सरे पे तो फ्लैबोलिथ नहीं था, तो बस कर दिया उन्होंने. ही डिडंट केयर. तो ठीक है. मतलब यहाँ पे क्या लर्न किया है हमने, मतलब अगर आप एब्नॉर्मैलिटी पिक करें और डोंट गो डंप ऑन इट, लाइक कीप इवैल्युएटिंग इट. ओके नाइडस नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ ओवरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू में कोई साइनस नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एयर नहीं नजर आ रही, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस नहीं है सॉफ्ट टिश्यू के. ठीक है. ये स्किन में कोई डिफेक्ट नहीं है. ठीक है. तो अच्छा ओके नेक्स्ट अब टू फर्दर इवैल्युएट अ केस ऑफ cortical thickening we can do an but tell whatever you can on the provided review plan. Next candidate, please. Madam Sadhya. This is a single image of the MRI stir sequence, fat set image, coronal view, in which I can appreciate there is an abnormal hyperintense lesion is seen below the superior pubic ramus that is appearing hyperintense. It is separate from the bone. It is causing no any bony abnormality, irregularity, or bony destruction. Rest of the visualized structures appear unremarkable. So I would put the differentials in this location. Either this is a soft tissue mass lesion, or either it is a soft tissue edema. I would correlate with the history of the patient. If there is any history of trauma, I would go on to the no history of trauma. Young athlete. Young athlete. So I cannot appreciate any stress fracture at this region or any cortical irregularity. About this soft tissue enhancement is suspicious. So I would enhancement नहीं है, edema का signal है ना, बस edema, bright yes. था. Contrast की image नहीं है. So I would advise a bone scan for further confirmation. No, don't. So I would young athlete है और medial compartment of thigh में edema आ रहा है, तो मैंने I only gave 2 differentials and he was satisfied. A stress edema जो stretching of muscle से produce होता है, because उसने मुझे guide किया कि it's a young athlete. Since it was my exam film and I had to close it, right? और दूसरा could be an early site of infection and he said कि ये infection था end पर. Like उसने मुझे इसकी एक further film दिखाई जिसमें it had gone worse. Yes. ये ऐसे थे नेक्स्ट फिल्म, लाइक ये जो आपको नजर आ रहा है ना लेफ्ट पे, ये मैंने इंटरनेट पे मुझे आई कुड नॉट फाइंड देम ऑन द सेम साइड, राइट? बट नेक्स्ट में ना साथ में ही इट हैड इन्वॉल्व द जॉइंट में फ्यूजन आ गई थी और सारा एडिमा आ गया. सो अगेन अप्रोच फिल्म, राइट? एडिमा दिखाया है ओनली इन द मसल्स, नो अदर एब्नॉर्मैलिटी. आप पर बिल्कुल एक्सीलेंट डिस्क्रिप्शन थी कि अंडरलाइंग बोन को भी नहीं रोड करा, स्ट्रेस फ्रैक्चर भी नहीं है, पेशेंट भी यंग है फॉर मी टू थिंक ऑफ एनी अदर लीजन, राइट? लीजन के लिए फिर आप नहीं रहते. तो इन्फेक्शन वर्सेस स्ट्रेस एडिमा इन द मसल्स. मैम इसके लिए मायोसाइटिस का वर्ड यूज करेंगे? Yeah, I said infection and he was satisfied, but you are right. Myositis is the right term. Yes. Next case.
So these are multiple images. So first one is X-ray of the hip joint, including proximal part of the femur. Other images are for 3D CT bone window, axial, as well as reconstructed images, in which I can appreciate there is a large, well-defined geographic lesion is seen in the proximal part of the femur at the region of the greater trochanter that is causing scalloping of the bone. It is showing the ground glass appearance with the bone deformity of the femur. I can not appreciate any soft tissue swelling, no periosteal reaction, no cortical break. So coming towards the 3D reconstructed images and the bone window image, I can appreciate there is a marked cortical thickening with ground glass appearance involving the calvarium bones, especially the frontal as well as the occipital regions. There is also thickening of the bone is appreciated. So features are consistent with fibrous dysplasia. This is a polyhistiotic fibrous dysplasia. So I would rule out the two anomalies or syndromes associated with fibrous dysplasia. There is Mezabrad and McCune-Albright. So precocious मगर in यहाँ तक McCune. बात गई नहीं थी मेरी because he showed me the bone scan. चलो Yes. अब वाइवा का सवाल था और वो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पता हो. He said ये हाई क्यों है? कुछ हाई तो सारा है ना, FD होता है ना, it takes up the Yes. वो the isotope. But what are the areas with even higher uptake? और वो ना इन माय एग्जाम के सब में नहीं था. ये इसका तो पूरा ही डिफ्यूजली बहुत अपटेक है ना. सिर्फ वो जो फीमर की नेक है ना वहीं पे था. मैं आपको अपना एग्जाम का बता रही हूँ. तो Yes. फोकल हाई एसयूवी आइसोटोपिक अपटेक था in that area. And he wanted everybody, he was asking this question from everybody कि FD में रूटीन एसयूवी से हाई एसयूवी एट फोकल एरिया पे क्यों आ रहा है? So तो वही बोन स्कैन में जब फोकल एरिया अपटेक हो या डिफ्यूज अपटेक तो डिफरेंशियस वही ब्लास्टिक हो गए, जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वही यही इंक्रीज बात. अपटेक. पेजेट में ना सार्कोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो कंसर्न करता है और एफडी में फ्रैक्चर के लिए. एफडी को ब्रिटल करता है. सो उसमें प्लास्टिक एक्टिविटी नहीं. सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैम. एफडी में किसके लिए करते हैं? फाइब्रस डिस्प्लेजिया में ना फ्रैक्चर, क्योंकि वो बोन में मैट्रिक्स ही नहीं है, ऑशियस मैट्रिक्स ही नहीं है. दैट बोन हैज अ ग्राउंड ग्लास मैट्रिक्स टू इट, ठीक है, व्हिच इज की हिस्टियोटिपिकल अपीयरेंस ही नहीं है टू होल्ड द वो साइट, राइट? सो इट इज ब्रिटल, इट विल फ्रैक्चर. Excuse me, मैम आपने क्वेश्चन क्या पूछा था मुझसे कि अपटेक इंक्रीज क्यों होगी या किस लिए बोन स्कैन करवाएंगे? हाई अपटेक नहीं, ये नहीं पूछा था बोन स्कैन क्यों करते हैं. वो कह रहा था ये बोन स्कैन उसी पेशेंट का है, बोन स्कैन लाए हुए थे और वो कह रहे थे इसमें फोकल अपटेक क्यों आ रहा है ज्यादा. यस. सारा फाइब्रस डिस्प्लेजिया है ना, सारा है ना, तो फोकल अपटेक क्यों आ रहा है फीमर में? मेरे वाले के सिर्फ फीमर में था. मैं आपको ये So that was the fracture because the bowing deformity or bowing deformity थी, neck of femur fracture था. मैम बाकी एरियाज में भी केस में तो मैम इसमें तो इंक्रीज है ना, अपटेक आ रहा है. यस. ये मुझे फिल्म नहीं मिल रही थी. अब इसमें हो सकता है कि मल्टीपल साइट्स हों जहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर्स हों. जब व्हेन आई वाज रीडिंग दिस फिल्म, जहाँ से मैंने ली RSNA का आर्टिकल था, वो कह रहा था दीज आर मल्टीपल माइक्रो फ्रैक्चर्स, बट आई डोंट थिंक दे वांट अस टू गो इन दैट डेप्थ. यानी ये रिब में भी फ्रैक्चर दिखा रहा है, यू नो, माइक्रो फ्रैक्चर्स. बट इन माय एग्जाम नो, ऑल ऑफ द एरियाज वर टेकिंग अ होमोजेनस अपटेक और सिर्फ नेक ऑफ फीमर में ऐसे राउंड ब्लैक स्पॉट था. ठीक है. सो आई वांटेड टू आस्क द कॉम्प्लिकेशन, तो फ्रैक्चर, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर दिखाया था उन्होंने. एक्सक्यूज मी मैम ये जो पिछली स्लाइड थी मैम, इसमें सी और डी में क्या दिखाने की कोशिश की हुई? इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज को उन्होंने दिखाना, ये मैम सी और डी में काइंडली बताइएगा. दिखा रहा था कि ये जो लाइनाइटिस होता है ना ऑशिया, इसमें दे कंप्रेस द cavernous sign portions of the ICS. This is from an article. This image is from an article. All right, thank you, ma'am. ये करते हैं ना cranial nerves are being compressed and ICS. इन्फिनिक्स आप है? अगर नहीं तो फिर डॉक्टर जमीना मैडम आप. जी सर.
अच्छा एक बस This is the मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर देना है बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट फिल्म्स. नेक्स्ट वंस यू विल ऑल नो बिकॉज वो मैंने इमीडिएटली कॉपी फिल्म्स लगाई हैं, बट you don't have to give me description and diagnosis. You have to close them with staging. ठीक है? फिर if you guys will be interested at the end of the class, we will discuss after these 4-5 slides. फिर we will do a complete staging and classification session, जहाँ पे फिल्म में हमने एंड तक फिल्म को लेके जाना है, because now we are nearly at the stage of mimicking the exam mode of us. ऐसे ही है ना? तो अब आप इस फिल्म को मुझे स्टेज करके देंगे. okay, ma'am. ठीक है? Okay. This is the X-ray pelvis frontal projection of a skeletally mature female patient, in which I can appreciate there is deformity of the femoral neck is appreciated, along with a loss of neck of the left side. There is also slight sclerosis along the acetabular side is also appreciated. There is loss of joint space is noted, and however no evidence of any fracture is appreciated. There is also bowing of the femoral shaft is also appreciated on the left side. Right side is also shows small sclerosis along the right femoral head. So on this image, अच्छा उसके साथ उसमें सिर्फ पैची सी स्क्लेरोसिस आ रही है ऑन द राइट साइड पे. सो बेस्ड ऑन दिस इमेजिंग फाइंडिंग्स आई विल गिव द डायग्नोसिस ऑफ एवीएन, और एवीएन की मैं इसकी फीकैट क्लासिफिकेशन दूंगी कि ये 4 है और राइट साइड पे 2 है. लेफ्ट पे 4 और राइट साइड पे 2. और नेक्स्ट मैं थोड़ा कंसर्न हूँ कि पेशेंट के पेल्विस में जो है ये वो फीकट एबनॉर्मल सी एनालिस लूज. आएगी या स्टैनबर्ग्स आएगी? मैम वैसे अब तो शायद अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक किसी की हाँ, मॉडिफाइड है आई थिंक. ये फीकट एंड आर्लट ना अब ओल्ड है, इसकी मॉडिफाइड स्टेनबर्ग है. और स्टीनबर्ग है टिपिकल ठीक. ऑर्थोपेडिक क्लासिफिकेशन फॉर अ नॉन ट्रॉमेटिक एवीएन, टिपिकल ऑर्थोपेडिक क्लासिफिकेशन फॉर अ नॉन ट्रॉमेटिक एवीएन is Steinberg's. Why? Orthopedic surgeons have to know how much of the femoral head is collapsed and how much is left. According to that, वो दो dynamics में से differentiate करते हैं, whether they will do a hip replacement or they will do a DHS. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये हमने मॉक्स में सीखा था फ्री के. और उन्होंने हिप हमें बताया था रिप्लेसमेंट या ग्राफ्ट लगाते हैं जो फिब्युला का. मतलब ये देखते हैं पूरा हिप निकलेगा या ग्राफ्टिंग होती है, पूछता है. ओके ये मैम. बड़ी लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल बी लर्निंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर एग्जाम में आपको रियलाइज होगा कि अच्छा वाओ, लाइक दीस थिंग्स. जैसे मैंने आपको नेक्रोटाइजिंग वर्सेस इंटरस्टिशियल एडिमेटस का बताया कि आई हैव लिटरली सीन देम टेक आउट द नेक्रोज. काले कलर की ऐसे गैंग्रीनस बाउल के जैसी पेनक्रियाज होती है और दे थ्रो इट आउट बिकॉज वो इट्स देयर, इट्स लाइक अ रॉटन वो fertile soil. So similarly for this, they have to, you have to think of, we are clinical radiologists. We are not just radiologists now, from now on. कि हम कंप्यूटर के पीछे रिपोर्ट करके इसको दे देंगे. No. Think from their point of view. अब उसने सोचना है कि अच्छा यार ये मेरा हिप बचेगा कैसे. ठीक है? उसकी भी एक लाइफ है ना, हिप रिप्लेस्ड हिप की भी एक लाइफ है. सो आप उसको स्टेनबर्ग देंगे, आप कहेंगे माय फाइंडिंग्स आर कंक्लूसिव ऑफ अ नॉन ट्रॉमेटिक बायलैटरल एवीएन. नॉन ट्रॉमेटिक है ना, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ अभी. With yes worse yes on जी left, मैम. worse on left, mild on right, stage 2 on right, sclerosis कह दें बस ठीक है, fair. और stage 4 on left. कौन सा 4 स्टेनबर्ग का? ABC, mild, moderate या severe? मैम मैं सवेर दूंगी इसको. बिल्कुल. more than 30% of the space is lost. So इसमें दो तरीकों से we can classify. Percentage is not preferred. Why? It cannot be measured. It's very subjective to the radiologist fee. Whatever is subjective is not appreciated. You will classify it like less than 2 mm, 2 to 4 mm या more than 4 mm depression है. less than 2 mm की depression है वो जो subtle सी होती है तो A होता है. 2 to 4 में moderate होता है और more than 4 mm depression है तो severe है. और अभी इसके तो थोड़ा सा इसी टेबुलम में भी चेंजेस आ गए हैं, तो इसको 5 भी दे सकते हैं. 5 में होता है कि जॉइंट पूरा स्पेस ही नैरो हो जाए और इसी टेबुलम में भी सेकेंडरी चेंजेस आ जाए. ठीक है? सो आइदर इट्स अ 4C और 5. सो एडवांस एवीएन. Everybody ओके मैम. ये agrees? पेल्विस. यस मैम. मैम ये पेल्विस में जो रेडियोल्यूसेंसीज आ रही हैं, ये पता नहीं है, मैं भी सोच रही थी तब कि ये किस चीज की इन्होंने दिखाई है, बट आई डिडंट बॉदर. इंटरनेट की इमेज है. ठीक है? सो एवीएन, एडवांस स्टेनबर्ग एवीएन. अच्छा यहाँ पे मैं आई वांट कि 2 या 3 बातें आप लोगों को क्लियर करूं.
जब MRI पे AVN की क्लासिफिकेशन होगी तो वही आपने मिशेल्स देनी है। जब आप रेडियोग्राफ पे करेंगे आपने स्टेनबर्ग देनी है। और अगर वो सुनने को पूछ लेते हैं तो आपकी फीकेट एंड एडल्ट है, जो कि जिसकी क्लिनिकल इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, ये उसी क्लासिफिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। वन मैम पे ये आपको कब आती तक है कि ये नॉर्मल है ग्राफ्ट टू लगाते हैं और है। कब ये रिप्लेस करते हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन तक? ये कर ये मुझे आई विल शेयर विद यू। ये मुझे वर्बली डिस्कस हुआ था मेरा विद और ऑर्थोपेडिक सर्जन। मुझे इस तरह कैटेगोरिकली कट ऑफ नहीं याद इनके, बट ओके वर्बली ही कम्युनिकेटेड इट टू मी कि ये हमारे लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है कि लेस देन 2 mm मोर देन 4 वाली कैटेगरी में है। लाइक बचा हुआ जॉइंट स्टेबल होगा या नहीं, ये उसकी वो है। मैम 2 mm से क्या हाँ, मुराद है, मुझे समझ उसकी नहीं ऐसा आया, सॉरी। जॉइंट समझ आया। स्पेस? अच्छा ठहरे मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, फेमरल हेड, ठहरे मैं बनाती हूँ। ओके ये देखें, ये हेड है, ये नॉर्मल कॉन्टूर है, राइट। अब ये देखना होता है, ये कट नहीं हो। अच्छा ये ठीक है, ये देखते हैं आप, ये यूं गिरा है, यूं गिरा है, या ये यूं गिर गया है। लेस देन 2, 2 to 4, मोर देन 4। तो ये ऐसे नहीं लग रहा कि मोर देन 4 ही है, यस यस ठीक है, ऐसे गुड, ना होता। सही। सही। ये देख, ये अगर हम मैयर कर सकते ना, हम इस टाइम डायकॉम पे होते, तो हम इसको देखते। ठीक है, ओके ये मैम। गिर गया। ठीक है, हाँ ये नॉर्मल है, ये गिर गया। ठीक है, क्लियर है। जी जी। अच्छा ओके। ये Okay, this is the heavily T2 weighted image, MRCP image, in which MRCP है ना? हाँ हाँ, एबिलिटी टू MRCP image है, कॉर्नर okay, MRCP का मेरे पे। in which I can appreciate there is intrahepatic, no, there is dilatation of the CBD is noted with the mild intrahepatic cholestasis, and there is also opacification of the pancreatic duct is also appreciated, and the pancreatic duct is coursing towards the right side, नहीं, रॉन्ग and डायरेक्शन में जा रहे हो। रिव्यू छोड़ दो, लीव okay इट। फिर से देखें, okay एलिफेंट को देखो। ओके CBD में अब्रप्ट कट ऑफ है, नैरोइंग है, और हाउएवर ओके मैम, ये तो किडनी भी साथ में ओपेसिफाई हो रहा है, आई थिंक नजर आ रहा है ना, किडनी भी, ये शायद अब्रप्ट कट ऑफ है CBD के लेवल पे, अच्छा, और आगे भी these are the ओपेसिफाई नहीं हो mistakes रहा। that can these are the mistakes that can lead us to trouble. What is the if anybody else can even pick, what is the elephant in this film? What is the biggest finding? आप छोटी चीजों पे जंप कर रहे हो, तीनों छोटी बातें थी। पेनराइट डार्क मैम इसमें ये एक तो है ना कि कॉमन बाइल डक्ट इज ग्रॉसली डायलेटेड अलोंग विद दी this is कॉमन, the बोथ द elephant. Common bile duct is grossly dilated. जी ठीक है, अब चलें आगे, अप्रोच करें उसको। मैम मैंने करना ग्रॉसली है। डायलेटेड तो है, लेकिन नीचे इमेज आ रहा है उसमें, मैम मुझे नहीं ये नहीं पता चल रहा है इमेज, सॉरी। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। नहीं नहीं, नोबडी हैज टू बी सॉरी, इट्स अ लर्निंग सेशन। ये लर्निंग किए क्योंकि मुझे इसका टाइप सी लगा था तो मैंने आपको फर्स्ट भी दिखा दिया। लाइक डू यू सी दिस इज अ ग्रॉसली डायलेटेड CBD throughout its entire extent, and also no other abnormality is appreciated. So what मैम is the मुझे ना एक्चुअली इस commonest पे indication? मुझे दो चीजें लग रही थी। फर्स्ट आई थॉट कि इट्स अ कोलिडोकुल सिस्ट टाइप 1, Good. एंड हाँ, उसके बाद मुझे excellent. लग रहा था कि अभी मुझे ना आई कांट सी कि अब्रप्ट कट ऑफ आ रहा है, उसमें शोल्डरिंग है कि नहीं है, तो मैंने इसको पहले पता क्या बिनाइन ही करना बना है ऐसे में, ये दिस हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, राइट। ये तो जी एवरीबडी गोस थ्रू इट इन द एग्जाम। कि जी अब मुझे एक ही फिल्म में बेजोर और वो लग गया था, तो वो वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं क्या बताऊं। व्हाट यू डू इज don't jump to the difficult one that you are thinking. Appreciate what you can see. If he will need another additive information from you on that film, he will ask you to do it. Address the elephant,
give the classification of the elephant and then say कि मेरा ये भी concern है. अगर वो concern होगा, examiner आपको उस पे लेके जाएगा, otherwise कहेगा let it be. But don't skip the elephant in the film to appreciate the other thing. Agreed? You could मैम see क्या फाइंडिंग है इसमें? सॉरी, ये CBD बेजोर is grossly dilated throughout its entire extent, highly raising the concern of type 1 polydocal cyst. ओके ओके, सही. Fusiform dilatation of CBD. This, ये जो आपको सबसे पहले नजर आ रही है, ये बिल्कुल ऐसे नजर आती है हमारे. मैम इसमें तो proximal भी dilated है, intra और extrahepatic सारी dilated है. वो जो ये type image 1 आपने, polydocal C भी है, वो yes, थोड़ी सी dilated है, but this is a type 1 polydocal C. ये this is radiopedia की diagnosed image. फिर next ये image भी सही नहीं है, इसमें तो सारे dilated आ रहे हैं. वो बैक प्रेशर इफेक्ट की वजह से ना इंट्राहेपेटिक डक्ट्स डायलेट हो जाती हैं कॉमनली. सिस्ट नीचे है, बैक प्रेशर ऊपर. तो सिस्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट ही कर रही होती है ना. ये मैंने कॉमनली बहुत केसेस देखे हैं, मेरे रूटीन में ऐसे ही आता है. इसमें डिफरेंशिएट आपने टाइप 4 और टाइप 1 को ही करना होता है. अच्छा, next. हेलो मैडम, अभी वेट करें. डॉक्टर हीरा ने लेफ्ट किया है तो मेरा कल सिग्नल इशू है. मैडम उजाला, आप प्लीज लीजिएगा नेक्स्ट केस. जी सर. मैडम कनेक्ट हो रही है, बस वेट करें. Okay, hello. जी मैम. जी, next candidate की फिल्म ले लो. जी, I am provided with the contrast enhanced CT scan of the abdomen, arterial phase at the level of the liver, in which I can appreciate there is a linear laceration which is noted involving the neck of the pancreas. However, I cannot appreciate the separation of the duct of the pancreas
but I would like to see this on the MRCP images to see the ductal injury. There is no surrounding fluid associated with it. Rest of the bilateral kidneys appears normal. The visualized section of the liver appears normal, and the spleen is normal. Visualized bones appears unremarkable. So on the basis of this finding, there is a traumatic injury to the pancreas involving the neck of the pancreas, at the junction of the head and neck of the pancreas. It is seems to be up to 1 to 2 centimeter. So on the basis of these findings, I will grade it grade 2 pancreatic laceration. ठीक है. No vascular injury noted. कोई रिब की इंजरी? No. ठीक है. Trace right perinephric hematoma पड़ा. Would you appreciate it? Yeah. Okay. Trauma की फिर again a reminder. Keep your checklist. मैम इतना सटल सा था ऐसे. लेफ्ट साइड पे पेरिफेरिक PIH है. इन माय केस तो ना वो लिवर वाले केस में पड़ा हुआ था पेरिनेफ्रिक हीमाटोमा, बस रिब के आगे थोड़ा सा मतलब लाइक रिब और किडनी में गैप नहीं होता ना, बट इन माय फिल्म था, मतलब देयर वाज समथिंग कर्वीलिंग. सो इट वाज अ पेरिनेफ्रिक हीमाटोमा. अच्छा, लेसरेशन, एनी लेसरेशन, हेपेटिक लेसरेशन, स्प्लेनिक लेसरेशन, पैंक्रियाटिक लेसरेशन, अगेन अ रिमाइंडर. Revise your classifications and stagings and always give the staging of the disease. Next candidate. सर ये भी मैं ले लूं कि दूसरे कैंडिडेट ने लेना है? जी आप ही मैडम, आप दो. I am provided with the axial section of the CT abdomen, CT pelvis at the level of the iliac spines, iliac blade. In this, I can appreciate there is a thickening of the bowel loop, small bowel loop with marked thickened with contrast. However, contrast is seen passing through it. There is a surrounding fat stranding noted to this bowel loop in the retroperitoneal region. However, no obvious collection is noted. I think this is a sigmoid colon, not the small bowel loop. On the basis of these findings, I'm concerned as few diverticuli are also noted on the lateral aspect of this bowel loop. So on the basis of these findings, आपने खुद ही उसको करेक्ट कर लिया. So it's a large colonic bowel loop. It's a sigmoid colonic loop. There are multiple diverticulae. बिल्कुल ठीक गई हैं आप. Excellent. जो आपने सारे ही नजर आ रहे हैं. और भी है ना? There are other diverticulae as well. Multiple diverticuli. So diverticulitis with the local collection, local fat stranding with phlegmon. I can't see a cystic area in it. So surrounding fat stranding, I will grade it as diverticulitis with grade 2. Next, I will as this as a second stage. So these are managed conservatively. No surgical intervention is needed in this case. Excellent. I will convey my findings to the referring physician. We are closing our film here. Okay, this is how our film should end. When you are describing the findings, describe all the findings, then go up to describing the pertinent negatives. I cannot appreciate any surrounding. So this is an axial image of post-oral contrast enhanced as well as IV contrast enhanced CT scan pelvis taken as abdomen and pelvis taken at the level of pelvic inlet or sacroiliac joints. I can appreciate that one of the bowel loops of the colonic loop, like the sigmoid colonic loop, is diffusely edematous and thickened, showing homogeneously
thickened walls along its anterior as well as the posterior margins. I can appreciate there are multiple colonic diverticula which are noted within this loop as well as few other colonic diverticula, right? With few of the diverticulae showing surrounding significant stranding and reaction, I cannot appreciate any well-defined word of collection or abscess in the pericolonic region or within the pelvis, जो कि इसमें नहीं है, but I would like to review. ठीक है, so आप कहेंगे और एग्जाम में ज्यादा ही होते हैं. So my findings are conclusive of a stage 2 disease which is handled conservatively. आप ट्रीटमेंट दें जो आपको आता है. So this film makes up for any other film. ठीक है, again diverticulitis की staging है. Stage 0 पे सिर्फ inflammation होती है. Stage 1 पे small pericolonic abscesses होती हैं. 2 पे the abscess is in pelvis. 3 पे extension outside pelvis and 4 पे तो it's a fecal peritonitis. मैम इसकी स्टेज में कंफ्यूजन हो रही है, ये 2 तक कैसे गया, क्योंकि हमें तो कोई वॉल्ड ऑफ एब्सेस कुछ नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर. इसको स्टेज 1 कर लें. यस मैम, स्टेज 0 या 1 सिर्फ इन्फ्लेमेशन है, सॉफ्ट टिश्यू चेंज, सिर्फ इन्फ्लेमेशन है. यस. नेक्स्ट कैंडिडेट. आई थिंक लास्ट स्लाइड है बस. मैम मैं ले लूं? जी ले ले मैडम, ले ले. Okay, I am provided with the retrograde ureterogram of a male patient in which the contrast is opacifying the anterior urethra and is reaching and is opacifying the bulbar urethra. However, the penile urethra is not opacified. In this image, I can appreciate multiple contrasts filling the surrounding vessels, periurethral vessels, and is seen going into the vessels in the inguinal regions. A streak of contrast is passing superiorly into the urinary bladder, which is I'm confused. This is bladder or not, because multiple internal septations are present in this area. You can ignore it. Okay. So there is likely the venous intravasation likely due to this stricture involving the posterior urethra, and also there is contrast extravasation at the level of the bulbar part, which is seen surrounding this region. So this is likely a case of traumatic stricture leading to the trauma leading to the rupture and extravasation of the contrast and leading to the stricture formation as well. Excellent. Post-traumatic urethral injury है. Will you stage it? This is involving the bulbous part, and इसके अंदर stage 4 होगी. I think 4. यहाँ पे ये बात important है कि 4 stages the involving the neck. So when it is not involving the neck, this one is only involving the isolated anterior urethra, right? Stage 5. Sorry, last मुझे याद नहीं number. बिल्कुल this is the catch in the classification. We were presented with a type 5, directly a type 5 anterior urethral injury, which was an isolated anterior urethra. So don't jump to the posterior urethral injuries. Yes. अब आपने डिस्क्रिप्शन सारी ठीक दी, आपने आरयूजी बताया, फॉल्स ट्रैक्ट्स बताए हैं, यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर है विच इज लाइकली ट्रॉमेटिक बिकॉज साइट ऐसी है, तो फिर स्टेज इट करेक्ट. सो दैट इज इट. स्टेज 5 यू गाइस. स्टेज 5 आइसोलेटेड ब्लैडर इंजरी, एंटीरियर यूरेथ्रल इंजरी, स्टेज 5. बस मैडम खत्म हो गया. चले. एक्सीलेंट. दिस इज द लास्ट मैडम. मेरा इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन मैडम. अल्लाह पाक ब्लेस यू अलॉट मैडम. बहुत सारी प्रेयर्स आपके लिए मैडम. गॉड ब्लेस यू मैडम. तो इंशाल्लाह नाइट में भी आज एक सेशन है सर जी शाम का, तो फिर इंशाल्लाह चलें. इंशाल्लाह. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू मैडम. A lot of thanks. Thank you, ma'am. Thank you so